let me first introduce like what activity I am going to take today. So today, Miss, I have been assigned a portfolio of students' publication this year. So whatever students are going to write the paper and publish it either in the journal, conferences, or some events that take place. So I will be guiding you in this process of paper writing. Okay, so that's why the activity means is I will guide you today on the how to write a paper, research paper. Okay, so first I will be sharing my presentation and then I will continue. Just a minute. Okay, so you just tell me that the window is visible to you, then I will start. Okay, so can you see this presentation which I am sharing? Swanan, Ankit? Yes, ma'am, it is visible. Okay, very good. Yes, So, ma'am. Visible. see, yes. So the title is like research paper writing. Okay. So first of all, first let me tell you like why we go for a research paper writing. Okay. So the thing is that you have done some work. Okay. And now you want that the work should be known to the world. Okay, so that is the basic purpose of writing a paper. That is the basic purpose of writing a research paper. So, some research is you have done, some work you have done, either since you are the students, it can be in the form of a mini project, a micro project, or the major project that you are going to take in the final year. The work can be anything, but now you want that the world should know it. That's why you take up an activity of research paper writing. Okay. So the purpose or objective of today's seminar is to let you know about all the basic terminologies required, then how to start and how to develop a paper. Okay. So now, first, a research paper in general, I can say it is a type of academic writing that provides analysis, interpretation, and argument based on that independent research. Okay. So analysis means whatever is done earlier. Interpretation means you have done some work and you have understood something out of it. And argument is finally you are making a statement like concluding remark that this is your concluding remark on this type of a research. Okay. So they are similar to the academic essays but lengthy and portray your writing skills as well as a research. So a research paper written by somebody will show a research as well as his or her own writing skills. Okay. How do you write a paper? That is also important. How do you present the things in front of others? Okay. Now, being a student, just we will be stick to your level and then we will see the terminologies. Okay. Now, when it comes to writing a paper, first thing is that you have to understand the assignment. Matlab, suppose your guide is there, project guide is there, or some teacher is there, and or you are undergoing a पोस्ट ग्रेजुएशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में से बहुत लोगों को अगर एमटेक वगैरह एमई जो भी करना है टीचिंग फील्ड में आना है
और या तो इंडस्ट्री ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं है कि ओनली टीचिंग फील्ड के लोग ही पेपर लिखते हैं। इंडस्ट्री में काम करने वाले, रिसर्च में काम करने वाले लोग भी अपना पेपर पब्लिश करते हैं, पेटेंट्स लिखते हैं। सो यू टू डेवलप दैट स्किल. So before you start, it's your work to first understand the assignment. जैसे suppose I am a project guide, I tell you कि तुम्हारे ग्रुप को एक कॉन्फ्रेंस पेपर लिखना है या तो जर्नल पेपर लिखना है. तो first of all, the thing is that you should be able to know the difference. Like how many types of papers are there? So journal paper is one and conference paper is one. Okay. So now first of all understand the difference between these two. So what is a conference paper? What basically is the difference between a journal paper and a conference paper? So in simple words, suppose मुझे ये बताना है, तो conference words say this journal paper is going to be more elaborative and lengthy. It will have more results as compared to the conference paper. So when you begin your research, you better write a conference paper. और कॉन्फ्रेंस पेपर में कैसा होता है, when you present a paper in a conference, you will have the similar kind of people who are working in that area of research and you are presenting your research to them in the form of PPT. जैसे आपने कोई रिसर्च किया, कॉन्फ्रेंस पेपर लिखा, लास्ट में आपको क्या करना है, ऑन द डेट ऑफ द कॉन्फ्रेंस you will be presenting your paper in front of some judges or session chair is going to be there and you will be presenting your ideas to them. ये होता है कॉन्फ्रेंस पेपर. और जर्नल पेपर में कैसे होगा कि you will be writing, suppose एक कॉन्फ्रेंस पेपर है, तो कॉन्फ्रेंस पेपर को लेटर ऑन उसमें रिजल्ट्स ऐड करके तुम जर्नल पेपर बना सकते हो. तो जर्नल पेपर इज गोइंग टू बी मोर एलैबोरेटिव देन द कॉन्फ्रेंस पेपर. आपने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे रिजल्ट्स है आपके पास, देन यू गो फॉर अ जर्नल पेपर. यू हैव समथिंग मोर टू रिप्रेजेंट, बहुत एलैबोरेटिव लेंथी पेपर आप लिख सकते हो, देन यू गो फॉर अ जर्नल पेपर. अब जर्नल पेपर व्हेन यू राइट, व्हाट यू डू, यू राइट अ जर्नल पेपर, you send it to the journal in the form of some electronic submission or whatever. You go to that journal site, वहाँ पे जाके आप पेपर आपका अपलोड करोगे, then they will assign the reviewers to your paper and then they will send you a message like whether your paper is accepted or rejected or it is marginally accepted with some corrections. अब कॉन्फ्रेंस पेपर में यूजुअली हमको जल्दी एक्सेप्टेंस आ जाता है, वी कैन पब्लिश अवर पेपर एंड यू हैव द लाइक माइंडेड पीपल, दोज हु आर वर्किंग इन द रिसर्च फील्ड, यू कैन प्रेजेंट योर पेपर. ओके, so this is the basic difference that I am telling you between a conference paper and a journal paper. A conference paper with some updations can be converted later on into a journal paper. Okay. And then after मतलब जर्नल का कैसे रहता है, देखो I would like to tell you some terminology. और बेस्ट जर्नल जो होते हैं तो उनमें इंडेक्सिंग होता है, जैसे स्कोपस इंडेक्सिंग आप लोगों ने सुना होगा, स्कोपस इंडेक्सिंग, SCI इंडेक्स पेपर्स, SCI एक्सपांडेड इंडेक्स, वेब ऑफ साइंस, ये डिफरेंट कैटेगरीज है जर्नल पेपर्स के. सो इट इज prestigious to get your paper selected and accepted in SCI journal or Scopus Index journals. That is considered as a reputed journals. Okay, तो journals में category होती है, reputation होता है. Conference में भी there are IEEE conferences, Springer conferences. Okay, so now once you decide, like आपको अभी आप स्टूडेंट लेवल पे हो, अभी एमटेक वगैरह नहीं, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, ग्रेजुएशन ही चल रहा है, तो लेट मी कम टू योर लेवल नाउ. जैसे मैं एक बात बता रही हूँ कि अगले सेमेस्टर में इन VNIT और अदर IITs देयर आर सम इवेंट्स कंडक्टेड
जिसमें कि देर इज अ चांस गिवन टू यू टू प्रेजेंट योर पेपर, जैसे VNIT एक्सेस है, यू कैन प्रेजेंट योर पेपर दे। और हमारे कॉलेज में भी टेक्सीजिसिस का हम इवेंट एक करने वाले हैं, अभी लास्ट टाइम भी किया था, इस बार भी करने वाले हैं, तो यू कैन राइट योर पेपर फॉर दैट एंड यू विल हैव अ चांस टू प्रेजेंट योर पेपर। ओके, so these are the possibilities that I am telling you. लेकिन ऐसा नहीं है, when you go to final year even you can write a simple journal paper for your project and you get an advantage or points for it. Okay, so now this is the paper presentation event, तो फिर उसके लिए now you are preparing. Okay, तो now what will be there first, एक तो research तो आपका होना ही चाहिए, but along with that I will first tell you about what is called as a template or format of the paper. Okay, so for that just a minute, actually I have these hyperlinks which I have inserted, but I will tell you or directly share these templates, और ये point थोड़ा अभी हम बाजू में रख देते हैं in the, just I will stop sharing this pen and I will share this format or template. Okay. Okay, so I hope you can see this template, students. Just give me a feedback that you can see this template which I am showing you. Hello? Yes ma'am, it is visible. ओके, सो टेम्पलेट का मतलब पहले मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको बता दूं कि टेम्पलेट का मतलब ये है कि द पेपर नीड्स दैट, ये आपको जो एक फॉर्मेट दिया हुआ है पेपर लिखने के लिए, मतलब उसमें क्या क्या चीजें स्पेसिफाई होती है, फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, टाइटल का फॉन्ट क्या होना चाहिए, टेबल कैसे होने चाहिए, figures कैसे होने चाहिए. So everything you can see that it is specified in this template. So this is an IEEE template that I am showing you, conference template that I am showing you. So what you can do when you start writing your paper, you can put the things in this template as it. ये नेट पे ये सारे टेम्पलेट्स ऐसे अवेलेबल होते हैं, and this document you can see it is show giving you all the format that is required. जैसे कि हर एक चीज, छोटी छोटी चीज, all the small things are mentioned कि टॉप में कितना ये छोड़ना है आपको, कॉलम छोड़ना है, बॉटम में कितना छोड़ना है, लेफ्ट राइट मार्जिन कितना छोड़ना है, फिर उसके बाद में हेडिंग्स कैसे देने हैं, फिर ऑथर के नाम कैसे लिखने हैं, ईमेल कैसे डालने हैं, every small detail is available in this template. You can see this. और देखो रेफरेंसेस को किस तरीके से लिखना है वो भी हर एक कॉन्फ्रेंस का या जर्नल का एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट. ओके, तो इसको थोड़ा डिटेल में तुम लोग जो पढ़ोगे, ऑल दिस टेम्पलेट्स आर अवेलेबल, but now right now my purpose is to make you acquainted with these terms which are there for the paper presentation. Okay, तो हर एक छोटी छोटी चीज उसमें लिखी रहेगी कि टेबल, फिगर कैसे डालने हैं, उसका ये क्या होना चाहिए, बिट्स कितने होने चाहिए उसमें, उसका साइज कितना होना चाहिए, एवरीथिंग इज मेंशन. ओके, so I think showing this one template is sufficient for now. If time required, if time permits, I will show you one more template. Okay, so I will come back to the presentation once again. So coming back to the, we have come from the templates. I have explained you what the templates are. IEEE conference, A4 format, MS Word. All these templates are available on net. ये elsewhere का template था दूसरा, which I can show you at last.
Okay. So now you have to begin writing a research paper. How you go about it? That we have to decide. So a research paper is a type of academic writing. Yeah, I think this we have covered already. Journal paper, conference paper, templates, yeah, research paper outline. तो सबसे पहले जो आपको पेपर लिखना है, पेपर लिखना स्टार्ट करना है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल लिस्ट द की टॉपिक्स. मुझे इस पेपर में क्या क्या चीजें डालनी है. यू सी योर रिसर्च जो आपने किया है, आपके रिजल्ट्स, ये सब आपके पास अवेलेबल है. उसके बाद में हम लोग पेपर लिखते हैं. तो यू विल जस्ट लिस्ट द की टॉपिक्स, देन आर्ग्यूमेंट्स एंड द एविडेंसेस, एवरीथिंग इज अवेलेबल विथ यू. फिर आप कैसे करोगे, यू विल जस्ट सिट एंड डिसाइड दैट ये जो पेपर है, यू डिवाइड देम इन सेक्शंस. जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. सपोज मुझे एक पेपर लिखना है, तो द रिसर्च इज ओवर एंड हाउ कैन आई राइट दिस पेपर. तो मैंने ऐसे सेक्शंस लिख लिए. इंट्रोडक्शन, सेकेंड पार्ट में मैं लिखूंगी मैथमेटिकल एनालिसिस और लिटरेचर सर्वे. देन आई विल पुट द मेथड्स एंड मटेरियल, मतलब मैंने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया, एल्गोरिथम क्या है, रिजल्ट्स क्या है, उनको टेबुलेट करना, रिजल्ट्स लिखना, उसका कंपैरिजन लिखना. एंड देन मेरा जो कंक्लूजन है दैट आई विल पुट लास्ट. तो ये 4 पॉइंट्स मैंने अभी लिखे हैं. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. मैथमेटिकल एनालिसिस की जगह आप लिटरेचर सर्वे भी डाल सकते हो कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगी मैं, फिर लिटरेचर सर्वे में क्या करूंगी मैं. ओके, सो दिस थिंग फर्स्ट एक रफ पेज पे यू राइट हाउ कि व्हाट इज गोइंग टू बी द फॉर्मेट ऑफ माय पेपर. ओके, वैसे 4-5 पॉइंट्स से मेन पॉइंट्स आप लिख लोगे. After that, just just make a rough draft of your paper section wise. जैसे मुझे इंट्रोडक्शन लिखना है, तो इंट्रोडक्शन आई विल राइट. इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है उस पर भी मैं बताऊंगी. तो इंट्रोडक्शन लिखना है, तो क्या क्या क्वेश्चन से जो इंट्रोडक्शन में आंसर होने चाहिए. So answer the following questions in the introduction, like what, why and how. So what you are doing, why you are doing this, why you are going for this kind of a research, what is the need, then define a problem statement and then go for how you have done it. Okay, तो introduction में एक expected है कि थोड़ी सी brief about the topic you give and then you elaborate your topic कि why there is a need for this research and all. एंड आखिरी में उसके में ये लिख दो कि हाउ यू हैव अरेंज दिस पेपर, कि सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन 3 में क्या लिखा है और कंक्लूजन. तो ऐसा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको प्रिपेयर करना है. सो व्हाट शुड यू स्पेसिफाई, द टॉपिक यू शुड स्पेसिफाई एंड इट्स बैकग्राउंड यू शुड स्पेसिफाई. मतलब लिटरेचर सर्वे अगर आपको सेक्शन 2 में नहीं डालना है तो सेक्शन 1 में ही आप कुछ हद तक लिटरेचर सर्वे, मतलब लिटरेचर सर्वे का क्या मतलब है कि मैंने 10 से पेपर रिलेटेड पेपर कलेक्ट किए, तो इस पेपर में क्या किया है, उस पेपर में क्या किया है, व्हाट इज एक्सप्रेस्ड इन ईच एंड एवरी पेपर दैट आई पुट टुगेदर एंड आई कॉल इट एज अ लिटरेचर सर्वे. देन व्हाट आर द की टर्म्स इन दैट रिसर्च. जैसे सपोज इंटरनेट ऑफ थिंग्स और चैनलाइजर, ये मेरे की रिसर्च टर्म्स है, तो उनको मुझे एक्सप्लेन करना इंट्रोडक्शन में जरूरी है. Whatever are the key terms that are there in my research, जैसे कि कंप्यूटर विजन, IoT, एम्बेडेड सिस्टम, तो उनको मुझे इंट्रोडक्शन में उस टॉपिक तक लेके जाना है जहां मैं मेरा रिसर्च स्टार्ट होता है. देन द राइटिंग द कंक्लूजन. ओके, सो कंक्लूजन दैट द रीडर शुड मेक आउट the argument of the paper. Finally ये करने के बाद, रिसर्च करने के बाद तुम्हारा क्या कंक्लूजन है. सपोज तुमने 4 मेथड्स लिए, उनका कंपैरिजन किया है, या तुमने जो मेथड की है, यूज की है, वो अर्लियर पेपर से कैसे बेटर है, क्या परसेंटेज है उसका. सपोज पावर कंजम्पशन लेस हो रहा है तो 20% लेस हो रहा है, 15% लेस हो रहा है. एरिया कंज्यूम्ड अगर चेंज हो रहा है तो कितने % से चेंज हो रहा है.
या मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्सिटी अगर चेंज हो रही है तो कितने परसेंट से हो रही है. सो कंक्लूडिंग रिमार्क यू शुड पुट इन द कंक्लूजन एंड योर कंक्लूजन शुड हैव द सेंस ऑफ फाइनैलिटी. ओके. So this way, section wise, just I am describing you how will you go about it. पहले आपने sections लिख लिए, बाद में आपने हर एक section का rough draft बनाया और फिर आपका एक पेपर का रफ फॉर्मेट तैयार हो गया. Then these are some terminologies which I feel are required for paper writing. तो जैसे कॉन्फ्रेंस पेपर है, कॉन्फ्रेंस में मुझे पेपर अगर डालना है तो नेचुरली हम पूरा पेपर एकदम से नहीं भेजते, या पेपर के साथ साथ हम लोग जर्नल पेपर हो कॉन्फ्रेंस पेपर तो हम एब्स्ट्रैक्ट भेजते हैं, एब्स्ट्रैक्ट सेंड करते हैं. तो व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही ये है कि इन फ्यू वर्ड्स यू आर राइटिंग एवरीथिंग अबाउट योर पेपर. तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन से लेके आपने उसमें क्या किया है और आपका उसमें कंक्लूजन क्या है, ये पूरा पेपर का एब्स्ट्रैक्ट आपको 100 वर्ड्स या 200 वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है. वी कॉल दिस एज एन एब्स्ट्रैक्ट. ओके. तो एब्स्ट्रैक्ट में कई बार ऐसे वर्ड लिमिट वगैरह दी होती है, तो यू हैव टू फॉलो दैट कि इतने वर्ड्स में आपको, क्योंकि सी naturally people or reviewers have less time, तो इतना पेपर they may not have time to go through your complete paper. So your abstract should be such that कि जो चीजें आपने की है तो वो abstract में आनी चाहिए. Then keywords are also mentioned in the paper. Keywords means whatever technological terms that are required जिससे आपका पेपर कनेक्टेड है. जैसे कि मैंने जो PhD के पेपर्स लिखे उसमें चैनलाइजर, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, कॉग्निटिव रेडियो, ऑल दीज आर माय कीवर्ड्स. तो कीवर्ड्स से कैसे होता है आपका पेपर सिलेक्ट होता है या रिव्यूअर को समझ में आता है कि कौन से एरिया से आपका पेपर बिलोंग करता है. देन कंक्लूजन तो मैंने पहले ही बताया, और टेम्पलेट के बारे में भी मैंने पहले ही आपको बताया है. Okay, so abstract is the summary of the main contents of the paper, and the abstract should give concise description of the basic contents of the paper. शॉर्ट में आपको लिखना है कि आपके पूरे पेपर में क्या है, और मतलब जो भी चेंजेस कंक्लूजन में भी लिखे, अगर कुछ आपने ऐसे परसेंटेज वाइज लिखा है तो वो सब भी लास्ट एब्स्ट्रैक्ट में आना चाहिए. So sometimes the word limit is specified in the journals, जो जैसा कि मैंने बताया कि 100 वर्ड्स में 200 वर्ड्स में आपको आपका एब्स्ट्रैक्ट लिखना है. ओके. तो कीवर्ड्स आर द इम्पोर्टेंट वर्ड्स इंडिकेटिंग द टेक्नोलॉजी ऑन विच योर रिसर्च इज बेस्ड. जैसे कि IoT इज अ कीवर्ड, क्लाउड कंप्यूटिंग इट इज अ कीवर्ड, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो इज द कीवर्ड. ओके. सो yes. So this way actually I have explained you all the terminologies and about the paper writing and how to write a paper. Just a minute. So जैसा कि मैंने कहा था कि if the time permits, I will show you one more template. So, and then I have to tell you something about the, yes, one term is remaining which I will just explain orally, that is citations. ये term मुझे आपको ये करनी है, बतानी है. तो before that just I will take you to that elsewhere template. हर एक जैसे IEEE है, बॉडी है, elsewhere है, साइंस डायरेक्ट. तो ये देखो ये elsewhere का टेम्पलेट है. तो इनको ऐसा चाहिए कि कभी 1 कॉलम वाला फॉर्मेट होता है, कभी 2 कॉलम वाला फॉर्मेट होता है. तो एज पर द जर्नल और द कॉन्फ्रेंस यू हैव टू अरेंज योर पेपर इन दैट फॉर्मेट एंड प्रेजेंट. ओके. हाँ. तो इसके बाद में व्हाट आई वांट टू टेल यू इज about something the citations. This term I have not covered in the presentation, but that is very important. तो when you write a paper, जैसे आप जैसे सेकेंड, जैसे मैंने बताया पार्ट में, सपोज लिटरेचर रिव्यू आप डाल रहे हो सेकेंड पार्ट में,
या जब कोई भी पेपर आप लिखते हो तो नेचुरली यू हैव रेफर टू 15, 20, 25 पेपर्स ऑन बेस्ड ऑन दैट, उसके बाद में आप अपना पेपर लिखते हो। तो यू हैव टू अरेंज योर रेफरेंसेस लाइक दिस। और जैसे मैंने सपोज 1 to 15, 1 to 20 रेफरेंसेस मेरे अरेंज कर लिए, तो उसके बाद में मुझे क्या करना है कि जैसे सपोज आई यूज समथिंग फ्रॉम द, ऐसा तो सभी का सभी अपना तो नहीं होता ना। इंट्रोडक्शन में सपोज मैंने एक सेंटेंस यूज किया फ्रॉम सम पेपर, या कोई फिगर मैंने यूज की जो मैं चाहती हूँ कि एज इट इज मैं रिप्रोड्यूस करूँ इस पेपर में, क्योंकि ये जरूरी है। तो इन दैट केस वॉट एवर यू टेक फ्रॉम द अदर पेपर्स, जहाँ पे भी आपको ये करना है वहां पे आपको ऐसा ब्रैकेट में रेफरेंस डालना पड़ेगा दैट यस दिस सेंटेंस, उसके सेंटेंस के बाद आई विल हैव अ स्क्वायर ब्रैकेट और मैं ब्रैकेट में लिखूंगी 1। इसका मतलब ये पेपर नंबर 1 का रेफरेंस मैंने अपने पेपर में डाला है। तो दैट इज कॉल्ड एज citation. That means I am citing somebody else's paper in my paper. तो जहां पे भी मुझे रेफरेंस देना है, व्हाट आई डू, आई टेक द रेफरेंसेस फ्रॉम द अदर पार्ट। ओके, सो this all these are the terminologies which are required for writing a paper. Okay, so now this is all about the activity, like means मुझे जो बताना था इंट्रोडक्टरी सेमिनार वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो इसका पर्पस भी मैंने बताया कि अगले सेमेस्टर में जहाँ जहाँ भी तुमको पेपर लिखने हैं, ये करने हैं, इवन यू कैन लेटर ऑन शो मी कि मैडम हमने ऐसा पेपर लिखा है, हमको यहाँ डालना है, या कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटीज होगी स्टूडेंट की, तो आई विल पुट इन अ ग्रुप एंड यू कैन सेंड योर पेपर्स। अभी फाइनल में ईयर में तो हम लोग कंपल्सरी करते हैं पेपर लिखना अपने रिसर्च टॉपिक्स पे, अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे हम कंपल्सरी करते हैं, ठीक है। तो फाइनल ईयर में जाके तो तुमको लिखना ही है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, तो जो अच्छे से तुम लोग कुछ कर रहे हो, तो आई विल टेल यू दैट कि अभी वीएनआईटी एक्सेस में वगैरह जो इवेंट होने वाला है, तुम लोग जरूर अपना पेपर पहले से रेडी रखो और डालो। एंड इफ यू रिक्वायर एनी हेल्प इन दैट, yes, I am there to help. अब मेरा कहना है कि आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स अगर है तो यू कैन ऑलवेज आस्क। उसके बाद में मैंने गूगल फॉर्म बनाया है जो मैं अभी डाल रही हूँ अपने ग्रुप पे। तो वो गूगल फॉर्म मतलब जस्ट फॉर द एक्टिविटी एंड फीडबैक यू कैन गिव, और इवन इफ देयर इज एनी सजेशन क्वेश्चन यू मे आस्क। तो मैं भी ग्रुप पे ये डाल रही हूँ। तो तुम लोग सभी आप फिर से रिपीट करेंगे? क्या रे स्वानंद, क्या रिपीट करूँ? मैम वो क्या फॉर्म भरना है? नहीं, मैं अभी डाल रही हूँ ना ग्रुप पे, मैंने गूगल फॉर्म डाला है। अभी देखो सेक्शन ए के ग्रुप पे आ भी गया होगा, तो वो फॉर्म भर देना। मतलब उसी में तुम्हारी अटेंडेंस भी हो रही है इस एक्टिविटी की, और मुझे जो फीडबैक चाहिए वो भी हो रहा है। आया समझ में स्वानंद? हाँ मैम, मेरे को क्या लगा कि कुछ 4th ईयर के वो इस टेम्पलेट से कुछ रिलेटेड है, ऐसा लगा मेरे को। नहीं नहीं, टेम्पलेट तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना, टर्मिनोलॉजी सब कुछ मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है हाँ अभी। मैम, मेरे को ऐसे लगा। हाँ हाँ, तो तुम लोग क्या अभी सभी लोग जितने, अभी तो 15 लोग दिख रहे हैं मुझे प्रेजेंट, वो सभी के सभी ये गूगल फॉर्म भर दो, ठीक है। मतलब दैट विल बी योर अटेंडेंस ऑल्सो प्लस योर हाँ फीडबैक मैम। इज ऑल्सो आई एम गेटिंग। हाँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि प्लीज फिल द गूगल फॉर्म।
और कुछ क्वेरीज वगैरह हो तो ऐसे भी पूछ सकते हो या बाद में भी पूछ सकते हो। ओके देन यहाँ पे अटेंडेंस देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो अटेंडेंस उसमें आ जाएगी, यू कैन लीव। ओके, बस फॉर्म भर दो सब लोग। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।